Assalamu alaikum, everyone. Thank you so much for joining. Thank you for your patience, firstly, for people who were waiting. और बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you for joining us in the year 2025. And we are very excited to kick off our webinar series. And in fact, more excited to have our special guest today here and this session today, which has come from the feedback that we've received for people who've actually joined us on how to actually enter a successful business in North America. तो बहुत खुशी हो रही है मुझे आज हमारे स्पेशल गेस्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हुए. इट इज एक्चुअली माय प्लेजर टू इंट्रोड्यूस मिस्टर फजल अब्बास with an impressive educational foundation, mashallah, holding an MBA and a master's degree in economics. Mr. Fazal brings over 35 years of rich experience in sales, management, and marketing. Mashallah, his career journey spans across diverse markets. इन्होंने वेरियस मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के साथ काम किया है इन पाकिस्तान, यूएई, नॉर्थ अमेरिका, including the USA and Canada. And mashallah, throughout his illustrious career, he has been the key role for the sales and growth of many brands and many renowned companies, such as many household names like Shan Foods, National Foods, Unilever, Unikai, where he's been the key person to lead them into the markets that were unknown to those brands before. So, mashallah, I'm very excited to have Mr. Fazal here. And Mr. Fazal is a very respected member of our diaspora community here in Canada and is the go-to person for many brands and companies. From working for brands, today, mashallah, brands come to him to actually lead them into the North American markets. And some examples are currently he's working with the Tata Group, जिसका revenue north of $1 billion US है, or more than 150 activations around the North American market. So I'm very excited to have him here to share his experience, to share his learnings, and share how Pakistani companies who want to enter the North American market, what part they should follow, what are the things they should focus on. And inshallah, he will be sharing some examples and also his contact details for any guidance that our Pakistani community needs. So please feel free to use the moderation chat as well. I will be recording this video. So I will be sharing the link and all the chat questions that come up. I will be sharing all the summary of it as well. So please enjoy this. And without further ado, I would like to introduce Mr. Fazal. Thank you, Fazal Bhai, for joining us today. Very excited to have you here and very excited to hear about your experience and all about the market in North America. So thank you. जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम everybody. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का that you have joined this webinar. I will try to, we will try to discuss this under our humble capacity, inshallah. Though we have been experienced in this industry since last 35 years, we have been working in hardcore sales and marketing in different regions of the world, especially North America, where I've been working since last 16 years in hardcore consumer food marketing and sales management. So inshallah, the prelude of today's presentation is that we are going to identify the steps of establishing a successful business in North American market. There are a lot of, as you know, as Zohaib has already introduced it, I am also the owner of a business marketing consultation firm, Art Marketing Services, and we've been working for many clients right now. The formidable clients for whom we are working right now are Savola Group, Saudi Arabia, that we are working for GMG Group, we are working for Tata Inc., USA, and we are also working for, the Dawn Group, Doe Story Company and all that. So we have been working with all these formidable companies. So based on our observation and experience, mostly these companies, they need to know the actual chronological steps required to establish a business in North American market. And we have also learned this through our experience. So inshallah, today we'll be briefly browsing the presentation that I have prepared for you, and we'll try to have a very interactive session after we do the presentation. I will not go into the details and nitty-gritties of it because you are very well aware of all the details of these steps that are involved in establishing the business, but these will, at least give you an idea that what is required to be done as such.
So with this, I will share my screen, and if anybody has any questions in between, so he is most welcome to ask. But I think the appropriate way would be that, let me finish with my presentation so that the flow is not disturbed, and then we can have a discussion as well on this, right? So I will request you all to note down your points, and then we can have a collective distribution. I'm not saying that I'm an authority in this subject, so inshallah, we will try to respond to your queries as much as possible in our parts. The details can be explored later as well. So with this, I'll share my screen. Hopefully everybody can hear me, right? Okay. Right. So this is key norm for establishing a successful business in North America, present by my company, which is ARC Marketing Services. So the topics that we are going to cover today are brand or commodity. We should know the difference between a brand and a commodity. That's very important. Number two, the compliances to bring the product in North American market, and market scanning, then product segmentation, target market and positioning. This is a very important subject, and people should know the difference between product segmentation, target market and positioning. People are a bit confused on this that we have noticed, but one should have a very, very clear image of what actually product segmentation, target market, and positioning is. Then due diligence to find the right partner. Then we will move to alignment of distribution territories. That's very important because we should know the chunk of distribution territories which are, which are very natural, and the factors that needs to be considered while demarcating the distributor's territory is very important for us, so that uh, productive sales management can be achieved through this. And then we will talk of something about mainstream key accounts. And at the last, we will talk about the marketing support that are needed to be applied in this market. And so I'll just, I'll try to browse through all these subjects. So we'll start from the brand and commodity. So I don't think so that I need to talk further about brand and commodity. It's very simple. One should have a clear idea when he's trying to bring his business in North American market. One should have a very clear idea whether he's bringing a brand or he is bringing a commodity. Now, brand, as it's very obvious from the definition. I don't need to read the definition, but I will just point out the salient words or description of what brand is actually. So the brand has a unique identity. It has a unique identity. It is identified among all the products that are being served, and it should have a promise to its consumer, that what promise it is offering to the consumer, and based on that promise which is he is offering to his consumer, the consumer should have formed an image in his mind that what is the what product are we talking about, and what is the image of the product in the mind of the consumer. And it should have emotional and psychological connection uh, with the consumer whom this product is being offered. I don't need to, differentiate between emotional and psychological. Psychological, you all very well know, but if needed, we can discuss it also, and I can explain it to you as well. And it should have a differentiated value among other products. Whereas commodity, it is basically undifferentiated product. It doesn't have any identity. It can be interchangeable to any of the alternative or substitutes, and it is basically a product, a commodity available at a price, and that the price is also dictated automatically by the market forces. So this is basically a difference between a brand and a commodity. Why I wanted to, emphasize on this point is because a lot of people who are interested to bring their product in the North American market, they want a very good price for the product, but they should also realize whether the product they are bringing in North American market is a brand or a commodity. If it is a brand, then of course they can charge a premium price. It has a pull. It gets also support from trade also to place the product on the shelf actually. But if it's a commodity, if it's a rice product, which is very unknown and it's highly polarized market over here, then he should be realistic in understanding that probably he might not get the price that he is expecting. So all these factors are very important to consider. Then I think we have discussed already about the difference between brand and commodities, but I will just keep this slide over to you, just for you to note it down further what actually the differences are.
Please let me know if I'm too fast, right? Altamash bhai, Zohaib bhai. नहीं फजल भाई सर फजल भाई गुड है गुड है। और बेसिकली उर्दू में भी थोड़ा बहुत बता दें ताकि हमारी ऑडियंस अच्छा जी, नेक्स्ट है। अच्छा जी जी, ठीक है। जी सो आपने देख लिया कि ये डिफरेंस है ब्रांड में और कमोडिटीज में। तो आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं वो एक ब्रांड है या कमोडिटी है। ब्रांड की प्राइस आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं क्योंकि यू हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन दैट ब्रांड, यू हैव इन्वेस्टेड इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग योर कंज्यूमर। आपने एडवर्टाइजिंग की है, आपने उसका इमेज बनाया है, ब्रांड की पर्सनालिटी क्रिएट की है, इस वजह से ब्रांड की इक्विटी क्रिएट की है। This is the reason why I guess that you can charge premium price for a brand, but if you're bringing a commodity, then you should expect a reality check in the market as far as the price is concerned. आगे चलते जी, I just wanted to give you a visual look of a brand and a commodity. For example, ये अभी irrelevant है because basically Apple और ये Apple, ये एक basically idea दिया है आपको. It's basically कि जी Apple is a brand, right? Whereas एक आम Apple is a commodity. So it's not basically apple to apple comparison actually for the apples. लेकिन एक आपको एग्जांपल दिया है कि देखिए ब्रांड में कितना इन्वेस्ट किया और आज वो ब्रांड कहाँ पहुंच गया। सिमिलरली वी गो टू स्टारबक्स। देखिए आप एक स्टारबक्स की कॉफी देख लें जो कि तकरीबन 4.5 या $5 की यहाँ पे रिटेल होती है, और एक आम कॉफी है जो तकरीबन $2 की रिटेल होती है यहाँ पे। सो इसके लिए भी डिफरेंस है बिकॉज स्टारबक्स ने अपने ब्रांड को जो इमेज है वो क्रिएट किया है। इसी तरह नाइकी, अगर एक आप शूज देख लें, आप स्नीकर देख लें, अगर नाइकी का है तो वो $150 का है, लेकिन अगर आप आम स्नीकर if you go and try to buy it in the market, you will get it for $15. So that is the power of brand. Now, the second point, after establishing and after understanding that whether your product is a brand or commodity, the second step is that you need to understand and you need to be aware of the compliances requirement for bringing a product in North American market. और compliances में बहुत simple से, एक तो आपको पता है कि ये सारे जो documentation है, shipping documentation, I don't want to go into it, but still हम थोड़ा सा ब्राउज कर लेते हैं. You need to have commercial invoice, packing list, certificate of origin, साइट ऑफ एंट्री सर्टिफिकेट इन सर्टेन केसेस अगर रिक्वायर्ड है तो, फिर आपका बिल ऑफ लेटिंग हो गया, पैकिंग लिस्ट तो मैं वैसे ही कह चुका हूँ. एंड देन देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स इन यूएसए एंड कनाडा जो कि आपका जो है कस्टम कंप्लायंस कवर करते हैं, कंप्लायंस विद एजेंसीज कवर करते हैं, टैरिफ्स एंड ड्यूटीज का आपको पता होना चाहिए. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लेबलिंग रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल कस्टम कंप्लायंस के अंदर यू हैव टू फाइल, अगर आप यूएस की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट बाय फाइलिंग इंपोर्ट सिक्योरिटी फाइलिंग फॉर ओशनिक शिपमेंट. फिर इसके अलावा वहां पे होता है आपका automated export system for filing electronic export information. All these details can be further shared to you if you have any customized requirement. You can connect via Zoeb or Altamash Bhai to us, and we can further provide you the information and guidance also in this connection. But this is what I'm telling you are the major points. फिर अगर आप देख लें कि कंप्लायंस विद एजेंसीज में आप देख लें, देन यू इन यूएसए के अंदर यू हैव टू कंप्लाई विद कस्टमर बॉर्डर प्रोटेक्शन, सीपीबी, फिर एफडीए फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन, सीपीएससी, और अगर आप कनाडा में देख लें तो इट्स कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी एंड सीएफआईए, कनाडा फूड एंड इंस्पेक्शन एजेंसी. तो इनके साथ आपको जो है कॉरेस्पॉन्डेंस करनी पड़ती है फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स. और देन further you can also through some agents or through some consultant you can also know about the HST code of the product that you intend to bring in North American market. उसके ऊपर क्या tariffs and duties are applied on that. So, that is also very important for you need to have, because to establish कि आपका distributor या business partner की landed cost क्या होगी, so how much duty is he going to pay on this. So this is very important for you need to understand as well. And finally, the labeling requirements. लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली इन कनाडा. कनाडा के अंदर जो लेबलिंग रिक्वायरमेंट है, एज यू नो, इट्स बेसिकली बाइलिंगुअल लेबलिंग रिक्वायरमेंट है. यहाँ पे आपको अपना लेबल को जो है इंग्लिश एंड फ्रेंच, तो बोथ द लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स आर टू बी incorporated in your product label. And then they have a certain guidelines of actually printing the nutritional facts table
और वो गाइडलाइंस इनकी इंपॉर्टेंट है कि फॉन्ट्स का साइज क्या होना चाहिए, कहाँ लाइन होनी चाहिए, कहाँ लाइन नहीं होनी चाहिए. दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज. एंड इफ समबडी इज थिंकिंग दैट ही कैन डिजाइन हिज ओन लेबल, देन he is in risk of getting his product rejected at the time of exporting to North American market, especially Canada. So it is important that before uh, getting into this business, आपके लिए जरूरी है कि you should hire a services of a proper consultant to design a label of your product, ताकि आप तमाम guidelines को properly match कर सकें. ठीक है. इसके अलावा labeling के अंदर you need to put all the mandatory requirement, which is like आपको allergens देना पड़ता है, nutritional facts table देना पड़ता है, list of ingredients देनी पड़ती है दोनों languages में, French and English, और साथ में आपको batch number देना पड़ता है in case if the product is, Allah na kare, God forbids, if it gets recalled from the market. So they have a certain procedure to actually identify the product of that particular batch from the origin and then recall the product in case if there is something wrong is reported about the product in the market. सो लेबलिंग रिक्वायरमेंट के लिए ये है कि बजाय इसके कि आप खुद उसको डिजाइन करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हायर सर्विसेज ऑफ अ प्रोफेशनल कंपनी एंड कंसल्टेंट एंड देन गेट योर प्रोडक्ट लेबल डिजाइन. सो वी स्पोक अबाउट कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारा प्रोडक्ट ब्रांड है या कमोडिटी है. देन वी स्पोक अबाउट द कंप्लायंस एंड देन वी टॉक अबाउट द मार्केट स्कैनिंग. ये 2 पॉइंट स्टेब्लिश करने के बाद व्हाट वी नीड टू डू इज कि हम ये जाने कि हम जिस प्रोडक्ट को मार्केट करें नॉर्थ अमेरिका में, उसका कंपेटिटिव सिनेरियो क्या है, उसकी मार्केट स्कैनिंग करें और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें. वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाइल मार्केट स्कैनिंग, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वन शुड हैव एन आइडिया इज competitive landscape, जिसके अंदर you should know about the market players, who are the market players, what are the competitive strategy. Competitive strategy का मतलब है कि are they offering any consumer promotion, trade offers, trade marketing, या आप देख लें कि cross promotions क्या कर रहे हैं, या shelf पे क्या कर रहे हैं, या POS display करने के लिए क्या कर रहे हैं, awareness create के लिए क्या कर रहे हैं. एंड देन बैरियर्स टू एंट्री के अंदर ये होता है कि कुछ रेगुलेशंस होते हैं दैट यू नीड, आपको पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल मिल्क प्रोडक्ट यू कैन नॉट एक्सपोर्ट इन कनाडा, यू कैन नॉट डू दैट. सो ये तमाम चीजें आपके नॉलेज में होना चाहिए एज फार एज व्हेन यू आर ट्राइंग टू एंटर इनटू दिस न्यू मार्केट. सो थोड़ा सा कंपेटिटिव लैंडस्केप पता होना चाहिए. देन यू कम टू इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स. इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स के अंदर आप आते हैं जनाब के मार्केट ग्रोथ, कि जी आपकी इंडस्ट्री हिस्टोरिकली एंड प्रोजेक्टेड किस रेट से ग्रो कर रही है. देन यू कम टू इनोवेशंस. नई नई इनोवेशन मार्केट में क्या आ रही है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड सर्विस ऑफरिंग्स क्या हैं. देन यू कम टू रेगुलेटरी चेंजेस व्हिच बेसिकली गाइड्स यू कि ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉज क्या हैं, कंप्लायंसेस अपडेट क्या है. तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है. एंड फाइनली कंज्यूमर इनसाइट. दिस हैज गॉट मोर टू डू विथ योर मार्केटिंग consultants or people जो कि ये आइडेंटिफाई करेंगे. और a person, a marketer sitting in this market is in a much better position to identify कि यार यहाँ के कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स क्या है, फीडबैक एंड ट्रेंड्स क्या है थ्रू सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, व्हाट काइंड of a product they are looking for, what kind of a benefits attributes they are looking at the product. So ये बड़ा important है. And segmentation is basically grouping customer base on demographics and psychographic behaviors. So ये जरा, this is more of a marketing role to be played, but these 2 points are very important for you need to understand and should have the knowledge about. So market establish करने के बाद, this is the most important point that most of our clients do not have an idea about. जब आपने ये establish कर लिया कि competitive products, at what price the competitive products are available in retailing at the market, then you try to establish your own price value chain. And how do you do it? बहुत सिंपल है. आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि सबसे पहले you identify based on the information that you have gained from the market, identify that what is going to be the final consumer price of your product. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपने आइडेंटिफाई किया कि हमारी फाइनल प्राइस होगी $10 या $12. उसके पीछे फिर आपको जाना है एंड यू ट्राई टू आइडेंटिफाई द ट्रेड प्राइस कि मेरी अगर ये मेरी कंज्यूमर प्राइस है, देन अकोमोडेटिंग 35 or 30% मार्जिन फॉर द ट्रेड, यू एस्टैब्लिश कि दिस इज गोइंग टू बी माई ट्रेड प्राइस. ट्रेड प्राइस मीन्स शॉपकीपर की प्राइस.
And based on that, you identify that this is going to be the distributor's landed cost. ये distributor की landed cost होगी, और the difference between the trade price and distributor's landed cost वो आपका distributor का margin होगा, which you can identify on the basis of the percentage marginal commission. And finally, you are going to establish your FOB price. Now, how you do it? अगर ये सब आप करते हैं, तो बेसिकली आप क्या करते हैं, डिफरेंस बिटवीन अ कंज्यूमर प्राइस एंड ट्रेड प्राइस इज योर ट्रेड मार्जिन, जो आप आइडेंटिफाई करें परसेंटेज टर्म्स में और एब्सोल्यूट टर्म्स में, and then you establish a distributor's margin, which is roughly 25 to 30% being observed in this market right now. And this I'm talking about the margins, not markup. And I'm sure that you guys are very much aware of the difference between the markup and margin. And then finally आप freight का impact डाल के अपना FOB price को establish कर लेते हैं. Now there are certain other factors which also can be incorporated, but this is the simplistic model that you need to understand. अगर आप, if you target a particular consumer price of your product in the market, then what should be your FOB price? ताकि you should have an idea whether you'll be able to do it or not, or whether you'll be able to bring your cost down to that level that you can meet this consumer price, which is there established in the market based on the market scanning that you have done and the information that you have gained. आगे चलते हैं. Segmentation, target marketing and positioning. This is very important कि हमें ये पता होना चाहिए कि the product that we are bringing in the North American market, what segment are we trying to penetrate into? Segmentation का basis क्या है और segmentations क्यों किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Most of the people, they don't know about segmentation क्या होता है, target market क्या होता है, positioning क्या होती है. ना उनको segmentation का पता है, ना neither they know about target market, neither they know about positioning, and they have very high aspiration. जनाब मैंने तो 50 कंटेनर साल के बेचने हैं, 20 कंटेनर साल के बेचने हैं, वो भाई बेचने हैं. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टैब्लिश कि आपके प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी पोजीशनिंग क्या है, उसके मैं आगे आपको बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा यू विल हैव सम आइडिया अबाउट इट. सो सेगमेंटेशन इज बेसिकली डिवाइडिंग योर मार्केट इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स. ठीक है, अपनी मार्केट को आप डिवाइड करते हैं उन बेसिस के ऊपर जो मैंने यहाँ आइडेंटिफाई किया, विच इज I'll try to give you a slight definition of it. Product segmentation is the process of dividing a company's product into different categories based on specific characteristics, target audience, or market needs. ये इसकी theoretical definition है. अब आप segmentation जो अपने product के लिए जो करते हैं, market की segmentation करते हैं. Remember, segmentation is always done for the market. उस market के लिए आप specific कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जो कि उस पर्टिकुलर मार्केट को सर्व करे. सो द सेगमेंटेशन आर बेस्ड ऑन जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियर. फजल भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गए आप. Yes, can you hear me now? बैक. So did you guys? ये फिर म्यूट हो गया. अब ठीक है? जी जी फजल भाई अब आ गई आवाज. ठीक है, तो हम कहाँ थे? सेगमेंटेशन पे थे, राइट? जी So I hope you guys are catching me from the place where I muted. जी जी बस अभी 2 मिनट ये इसी स्लाइड का म्यूट हो गया था. Okay. So segmentation ka, as I have informed you, as I have told you that this is the basic segmentation of a market, on the basis of which you develop a category of your product to serve these different segments of market. And I will be elaborating further into how to differentiate between this segment by giving you a practical example.
For example, setting target market, Tesla's target market. If you see one of the if you see one of the segment of their market is demographics, like, they are targeting the product into high income professional, 20 to 55 years old. Then if you go to geographic segment, they basically target urban areas with charging infrastructure. Psychographics, they target people in this segment who are tech savvy, environmentally conscious, and status driven. And if you see whom they are targeting in behavioral segment, they are targeting people who are preferably innovator, they have sustainable incomes, and they love to have premium products. So this is the kind of, about देखिए कितना scientifically they have basically segmented their market, and how they have and how they are advertising and promoting their products in these particular segments, in what ways, and all the advertising campaigns and strategy are based on these particular insights. So we have defined के segmentation क्या होता है, demographic segmentation होती है, geographic segmentation होती है, psychographic होती है, behavioral होती है. And based on that, उस particular segment के अंदर we identify our target market, and then we create the dialogue and education and awareness through that particular target market. So now you know the difference between target market and segmentation. Segmentation is a segmentation of a market. Target market are the people or the consumer that are available in that particular segment where you want to market and penetrate your product, or you want to promote your product in those particular markets. अब basically एक falsafa है कि fish where fishes are. जहां मछलियां हैं वहीं मछलियां पकड़ो. तो उसी सेगमेंट पे जाओ जहां आपका टारगेट मार्केट मौजूद है. उस सेगमेंट में जाने की जरूरत नहीं है जहां पर टारगेट मार्केट ही नहीं है. अदरवाइज यू विल वेस्ट योर रिसोर्सेज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. देन फाइनली द पोजीशनिंग. हाउ डू यू पोजीशनिंग योर प्रोडक्ट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जनाब. A lot of people they think that हमारा प्रोडक्ट तो बड़ा प्रीमियम है, बड़ा एक्सक्लूसिव है, बड़ा चलता है पाकिस्तान में, it has a lot of demand, but this is North America. You need to make people understand that why your product is unique, why your product is differentiated. So सबसे पहले तो ये है कि you should identify that आप whatever product you are offering in the market, does it has that value for money that the consumer is willing to pay. सबसे पहले अपने आप से एक क्वेश्चन करें, क्या वो प्राइस वो प्रोडक्ट आपको ये आपके पैसों की वैल्यू देता है कि नहीं देता. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसके लिए व्हाट यू शुड डू, यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, दैट इफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन द मार्केट एट दिस पर्टिकुलर प्राइस, वुड यू बी बाइंग दैट प्रोडक्ट और नॉट. इफ यू आर कन्विंस्ड, देन यू कैन कन्विंस अदर्स. द सेकंड थिंग इज प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स. द व्हाट आर प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स. व्हाट आर प्रोडक्ट एट्रीब्यूट ये होता है, एंड यू ट्राई टू फाइंड आउट in your product as well. अब आप अपने प्रोडक्ट को इन पैरामीटर्स में चेक करें और इन पैरामीटर्स में बैलेंस करें. So product attribute is what product has. These are the features, characteristics और specification of a product. इस प्रोडक्ट में क्या खुसूसियात हैं, क्या है इस प्रोडक्ट में. And then benefits. Benefits क्या होता है जी. Benefit is basically what a product does for the consumer. ठीक है जी. तो ये डिफरेंस है. Product attribute is basically what a product has, and product benefit is what a product does for the consumer. Now, I can give you an example of a very renowned brand which is there in the market, and I will tell you that what are its product attributes and what are its product benefits. So basically, product attributes, as I've told you, कि product की intrinsic characteristics क्या है वो हम बताते हैं आपको, और benefits क्या है कि how it is beneficial for a consumer to utilize. So for example, we discuss हम डिस्कस कर लेते हैं very renowned masala brand or recipe brand which is there in the North American market. I don't want to name it right now, but it is very obvious. So उसके अगर अब देखा जाए product उसका product attributes क्या हैं, तो you will see that it is an authentic spice blend. Authenticity, number one. Number two, ready to use. Number three, it has variety of flavors. So these are all attributes, right? Which I'm talking about. Number four, it has got no artificial preservatives. Number five, it has got long shelf life. Number six, very convenient packaging for sustaining freshness, and it is globally available.
So these are the product attribute of that particular renowned brand in North American market, which has done a lot of hard work, a lot of endeavor to gain this position where they are right now. And then if you talk about their benefits, its benefit is basically how they benefit the consumer. Is it is time saving. It saves time. It prepares dish very quickly. It has consistency of quality. It can prepare traditional dishes. It enhances flavor of the dishes. It is very affordable and cost effective and reasonably priced, and it is widely available. So now I think you are very much aware of the difference between the product attributes and benefits, and you should also try to establish that what product attributes and benefits your product is offering before entering into the market. So most of the clients, they don't have any idea about, ठीक है आप मार्केट करना चाह रहे हैं आपके प्रोडक्ट को नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में, बट अंडरस्टैंड तो करें कि उसका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, जो आप हाईलाइट करके अपने प्रोडक्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं अमंग कंपटीशन. एंड द फाइनल पॉइंट इज कंपटीशन. यू हैव टू सी दैट व्हाट where the competition has positioned its product, and you then try to follow them as well, market leader को. ठीक है. Now, so first of all what we did, हमने ये understand किया कि हमारे पास brand है या commodity है. Then we touched upon compliances की हमें information knowledge होनी चाहिए, ISF filing वगैरह. Then we said that after that we should have market information by market scanning. That is very important. मार्केट स्कैनिंग करने के बाद हमने ये देखा कि हम ये देखें कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसकी सेगमेंटेशन क्या है, टारगेट मार्केटिंग क्या है, पोजीशनिंग क्या है. ये करने के बाद जब ये तमाम चीजें आप स्टैब्लिश कर लेते हैं, देन यू कम टू establishing. Now it is right time to find a partner in the market. कि आपको एक right partner मिलना चाहिए, एक आपको distributor मिलना चाहिए who is able to take your product to the market and on the trade shelf. But जब भी whenever you will try to speak to any of the formidable distributor in North American market, these all information, if you have with you, will benefit in terms of negotiating with him, and he will also understand, and you'll be able to convince him that your product carries this much weight. So due diligence ke liye, it's very simple. I don't want to emphasize on that, but if somebody has a question on that after the session, he can definitely ask. You should see the infrastructure of that business partner. You should know the capabilities of coverage उसकी कितनी है, vehicles कितनी है, sales staff कितना है, supply chain की क्या positioning है उसकी, authorities के साथ उसके जो है relationship कैसा है. Then you should also know the financial stability of that party. That can be done from third party, that can be established. A lot of companies, they have declared bankruptcy. So you should be very much careful when selecting your business partner, and should have all the details about their financial standings through third party evaluation. That is very much available in North America. Then ये देखना पड़ेगा कि route to market क्या है, how he is covering the general trade, how he is covering the mainstream, how he is covering the food service. ये ज़रा important होता है देखना. And while you are having a discussion with the distributor, you can also ask for him to state all these facilities that he carries. And you can also establish the trade relationship. If his product is very widely distributed in the market, then you obviously understand that he's got a very good trade relationship. अगर बहुत अच्छी और बड़ी and formidable stores के अंदर if his product is available, then you can also understand that yes, he has got a very good trade relationship, जिसकी वजह से वो बड़ी बड़ी shops के अंदर जो कि renowned shops हैं उसके अंदर उसका product available है. Then finally the ownership. Is he willing to take the ownership of your partnership? Is he willing to take the ownership of the product? Is he highly motivated? Because if he's not motivated, and if he's just doing for the sake of doing it, then it doesn't brings out the desired results. So it's very important that you should have the ownership as well. And finally, the MIS and reporting system is very important. अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी sales क्या है, आपका base क्या है, what is your target, what is your achievement, then how do you know that where you are proceeding actually? So without any data, without any information, it is just like driving a car without steering. So that is also very important. He should have a capability of pulling out all these information for you to have a proper navigation of your sales management system. Up we are inshallah coming up to the ending of our presentation. So after establishing the right business partner, we should try to
realign the distribution territories in North American market. Now, हमें ये कैसे पता चलेगा कि एक टेरिटरी कितनी बड़ी होनी चाहिए और इस टेरिटरी में कौन कौन सी रीजन्स कवर होनी चाहिए. So when we are basically demarking the territories, these are the considerations that are very important for us to know. Number one, उस particular region में demographics, population density क्या है? Is that region does have enough population for a distributor to operate? Number two, what is the size, market size and potential of that particular region? That is also very important to understand. And only a person who is very much familiar and acquainted with the North American market would be able to give you that idea. Then is the segmentation that you are targeting, is that segment is present in that particular territory or not? That is also very important. ये consideration करने के बाद you are able to draw or demark a distributor's territory. इस territory में वो operate करेगा. And it is also very important to create a discipline ताकि across जो है regional वो भी ना हो, यानी आपका प्रोडक्ट एक रीजन से दूसरी रीजन में भी ना जाए और हर डिस्ट्रीब्यूटर अपनी टेरिटरी में प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली सर्व करे. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट where is the warehouse of that particular distributor in that particular region is. Number two, how much is the travel distances from his warehouse to the market, that how frequently and how conveniently can he serve that market. Lead times of delivery kya hoga after taking an order to order booking and then delivering your product. So what's going to be the lead time? If in that particular region the distribution is far away, then it obviously affects your customer service. And Salesforce ka workload बढ़ जाता है, and then the competitive landscape kya? Where are the other competition who are there in the business? Where is the warehouse of their particular distributor in this particular region? Now this is a very important slide, and we basically charge our clients of development, but I'm sharing this with you. Inshallah, I hope it will serve you and it will benefit you. Now, if you do the regional alignment of the Canadian market, the natural regional alignment of the Canadian market is basically into three regions, which is Western Canada, Midland Canada, and Eastern Canada. In Western Canada, you can have a distributor to serve these three provinces: British Columbia, Alberta, and Saskatchewan. So Vancouver, British Columbia में बहुत बड़ी market है. If you go to Alberta, आपका Edmonton, Calgary is very big market, and Saskatchewan, Saskatoon, Regina is a very big market. So a distributor basically placed in this area can serve these three provinces very conveniently. Then the other is Midland Canada, which is Ontario and Manitoba. So a distributor who is placed in Ontario can very well serve this huge market. Now this is the most populated and huge market in Canada, and very important one. And then you can have a separate distributor for the Quebec region, which can serve the Quebec. And he is basically based, ज़्यादातर जो distributor, they are based in Montreal to serve the Quebec territory and the eastern provinces as well, of Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, and Newfoundland. Then we move to territorial, regional realignment and natural realignment in the US market. So you have, I'll show it to you with my arrow. You have this New England area, which comprises of 6 New England states: Maine, Vermont, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island. And then you have these 3 states, which is tri-state. यहाँ पे आप एक separate distributor form कर सकते हैं जो एक New England area को cover करे, these 6 states. And then you have, you can also depute a distributor which can cover New York, Pennsylvania, and New Jersey. You can have a distributor in Virginia which can cover all these states. You can have a distributor in Florida who can cover South Carolina, Georgia, Alabama, Mississippi, and Tennessee. He can cover all these states. Then you come to Michigan territory में ये 4 state cover कर सकता है distributor. फिर ये कहलाता है Midwest, which is basically Illinois. तो Illinois से आप ये तमाम states cover कर सकते हैं. Then you need to place one distributor in Texas, जो कि ये तमाम state cover कर सकता है. California वाला ये तमाम state cover कर सकता है. And obviously Washington, Seattle can cover all these 3 states. So this is, और ये जो बीच के जो states हैं, they are very very thinly populated. यहाँ पे कोई इतना खास market नहीं है.
but the most of the chunk of the US का market है वो इधर पे है, and these are the number of territories you can devise and appoint a separate distributor here for your products. Finally, mainstream key account. Now, अब आप हम देखें sequentially देखें तो हमने सबसे पहले brand and commodity identify किया, फिर हमने compliances के बारे में बात की, then we talked about how we should do the market assessment through हमने मार्केट की पोजीशन जानने की कोशिश की, वो करने के बाद हमने अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया सेगमेंटेशन टारगेट मार्केटिंग पोजीशनिंग के ऊपर, वो करने के बाद वी हैव identified who's going to be the right partner for us to market and distribute our product, and finally we thought के किस region में कहाँ distributor हमें बनाना चाहिए. So we have now idea that how things are shaping for your business. Finally, the mainstream key account. Mainstream key account is a very big market in North America. 95%, बल्कि मैं तो कहूँगा 97% जो market है वो basically mainstream key account है, ठीक है. और mainstream key account अगर आप देखा जाए तो कनाडा के अंदर जो है उसका $77.6 billion की जो है फूड मार्केट है कनाडा के अंदर, और $1,000 billion से ऊपर जो है यूएस के अंदर है, which comes from mainstream key accounts. Now, all of us, we want our product immediately to go into Walmart, Kruger, Loblaw, Sobeys और जनाब Metro Inc. हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बस हम पाकिस्तान या इंडिया से भेजें and it should immediately go into Walmart, Costco में चला जाए, Walmart में चला जाए, but it doesn't work like that. Mainstream has got certain conditionalities on the basis of which they will entertain your product, otherwise they will not even listen to you. And for that, you have to do a lot of preparation. You have to take a lot of steps. You have to be patient, make your case and then approach mainstream. Then only they will listen to you. Otherwise, they will not, because they have a limited shelf space. And in that limited shelf space, it is very much difficult for them to justify whether the product can be brought in or not. Now, how do they do? What do they see? This I will discuss with you in the next slide. This is a slide, just to give you $77 billion की जो market है साल की, वो it is divided among all these major groups. As far as the mainstream is concerned, it is basically Empire Company Limited, Overweighty Group, Metro, Walmart, Costco, others, Loblaw Company Limited, JPG, Jimmy Pattison Group. तो ये आपकी Loblaw की, ये basically Canadian market है, which is split among this percentage as far as the retail food sector is concerned. Then you come to the US market, which is, I said that, around $1,000 billion से ऊपर है कुछ, and it is projected highly in the year 2030. So if you want to be really successful in this market, you should aim to get into the mainstream key account also, because the main chunk and major business chunk lies there. And if you're able to crack it, alhamdulillah, there's nothing better than that. Now, the challenges for mainstream accounts. Mainstream account का जो category director है, we have discussed and we have met so many category directors in our tenure working in North American market. So first of all, they see that what is your presence in the general market. If you are not in the general market, आप general market में है ही नहीं, GT में presence ही नहीं है, and suddenly you want to take your product into Walmart, they will not even entertain you. Why? Because first of all, they will see that what is your presence in the general market, how the product is doing in the general market, how the product is placed and made available in general market. So that's very important. So ये step होता है. You first enter in the general market, distribute your product properly, and then make your case to take your product to these mainstream, telling them that this is your presence in the general market. कौन सी कंपनियों ने कौन सी formidable companies, Shan, National, they all first, basically they made their position in general market and then they went to mainstream. And then, mainstream, yes, accepted their case and they have listed the product in their system. दूसरी बात है, what they see, what mainstream see is the category gap. If they don't have that particular category with them, then they will definitely be interested to look into it. अगर उनके पास, for example, if you take a date to them, dates उनके पास 4 category of 4 brands मौजूद हैं, so they will probably not entertain your category. They will say, we have enough dates categories, so we are not interested to bring in the new one. We are already happy and satisfied with what we have right now. Or you should give them a very extraordinary proposition. For example, the market price of your product is like $25. And if you're offering them to retail at $15 or $12, they get excited. Yes, this is an extraordinary proposition and this can be workable. So they can give you a chance of entering into their system
for the time being, and then they will evaluate how the product is moving in that particular slot. If it's moving very good, then they will roll out into other stores as well. And then they also see the supply chain challenges, which is very important. They basically like to deal not directly with the company, they like to deal with the people who are there operating on the ground, especially distributors. After sales जो है after sales service can be procured from the supply chain factors. So that is also very important. And they also see that whether you are capable of supplying this their demand or not. And they will also, and you know what, if you're not able to supply them on time, the penalties are very high. So the whole proposition turns negative. So you should be very much aware of these realistic points and realistic factors that needs to be. Category manager of mainstream account, he always see that what is going to be the volume and scale of the business if this particular product is registered into their system. अगर वो देखते हैं कि यार ये product, if I'm taking this product and it has a potential of selling like 1 lakh, 100,000, 200,000 a year, no big deal for them. But if they see that yes, the potential of selling this product is like in millions, then obviously they get excited, they get interested, and they are willing to listen to your proposal. So these are some of the things that one must realize when he is aspiring about entering into the mainstream of North America, which is not very easy, very challenging, and you really have to be very patient, build your case, and then move. Finally, marketing supports. We always want to promote our product in the North American market, but we don't want to spend in terms of advertising. We are not willing to spend in terms of sales promotion, public relationing, personal selling, direct marketing, digital marketing. These are some very important points, very important factor, which is basically an investment to make your product or commodity a brand, and based on that, you can very well segment your market and identify the target market, position your product, and then establish your product in the North American market while following all these steps. With this, I will stop sharing my presentation, and now we can have a discussion. If anybody has any questions, please feel free to ask. Me, myself, Sohaib, and Altamash Bhai will try to, inshallah, respond to your questions. Thank you. थैंक यू सो मच फजल भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी जबरदस्त माशाल्लाह, वही वाली बात है, एक्सपर्ट एक स्पेशलिस्ट प्रेजेंटेशन थी, और दैट्स द मेन पर्पस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारा एक जो मेन पर्पस था, मैं आई एम द इंट्रोड्यूस करा दूं, अल्तमज अंजुआ हूं, मैं ट्रेड काउंसलर हूं एट टोरंटो, और आज की प्रेजेंटेशन का एक मेन मकसद है कि काफी सारे जो बंदे हमारे मौजूद है यहाँ पे, वो भी हैं जो कि सियाल एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन होता है फूड का इन टोरंटो, इट विल बी इन द एंड ऑफ अप्रैल, और उसमें से ज्यादातर हमारे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। और एक मेन पर्पस हमारा यही था कि ये जो एग्जीबिशन में हमारे डेलीगेशन आते हैं टीडैप से, वी वांटेड टू इन्फॉर्म देम, एजुकेट देम बिफोर दे कम हियर, सो जब वो लैंड करें तो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें उस ट्रिप का आने का, हमारे एक्सपोर्टर्स जो आते हैं पाकिस्तान से। तो अ पर्सन लाइक यू, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। आप अपने खुद टाइम से टाइम निकाला आपने, तो हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। आपने अपनी प्रेजेंटेशन में बेसिकली जो मुख्तलिफ चीज़ें बताई, प्रोडक्ट वर्सेस ब्रांड, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फिर हमें बहुत सारे सवाल आते रहते हैं हमेशा कि जी किस तरह मैं अपना प्रोडक्ट लोब्लॉस में डायरेक्ट ले जाऊँ, या किस तरह मैं अपना प्रोडक्ट वॉलमार्ट में डायरेक्ट ले जाऊँ। तो आपने जो बताया कि इट इज़ नॉट एज लाइक दैट। अगर आपने लोब्लॉस जाना है, वॉलमार्ट जाना है, कॉस्को जाना है, तो पहले आपने डोमेस्टिक मार्केट में जो स्मॉल स्टोर्स हैं उस पर अपनी प्रेजेंस दिखानी है, अपना वॉल्यूम दिखाना है, and only then you will be able to convince those procurement managers to put your thing into Walmart or Costco. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है हमारा। इसी तरह एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है जो कि मैं आपने थोड़ा टच ऑन किया, मैं चाहता हूं कि थोड़ा उस पर डायलेट कर दें कि कनाडा में अगर हम देसी प्रोडक्ट्स की बात करें, देसी फूड प्रोडक्ट्स की, तो जो मेन रिक्वायरमेंट्स है हमारी, वो CFA का एक होता है सेफ फूड वाला रिक्वायरमेंट, राइट? और एक पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट में उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या पूरे कनाडा में फ्रेंच और इंग्लिश दोनों की लेबलिंग जरूरी है कि नहीं, और जरा CFA के अलावा भी कोई और मतलब कि आप सपोज करें मसाला उठा लें या कोई सिंपल फूड कमोडिटी उठा लें, उसके लिए हमारी कनाडा के अंदर लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है एग्जैक्टली फॉर होल ऑफ कनाडा, और हमारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है बड़ी बड़ी मोटी मोटी, ये जरा इस पे जरा बता दें, इस पे क्वेश्चन भी काफी सारे आए हैं। ठीक है, जो हमारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वही हमारी लेबलिंग रिक्वायरमेंट है। कनाडा में लेबलिंग रिक्वायरमेंट ये है कि अगर क्यूबेक के अंदर आपको अपना प्रोडक्ट को
मार्केट करना है, जो कि तकरीबन 12 to 13% ऑफ द टोटल मार्केट शेयर करता है, विच इज सिग्निफिकेंट मार्केट, तो उसके अंदर तो फ्रेंच का होना बहुत जरूरी है, मैंडेटोरी है। बाकी रीजन्स के अंदर फॉर द टाइम बीइंग फॉर इंटरम पीरियड विदाउट फ्रेंच आपका काम चल सकता है, बट इट इज बेटर दैट फ्रॉम डे वन you should have your labeling in both the languages, French में भी हो और English में भी हो, and it is very much workable. तो ये मैंने आपको बता दिया। और रेगुलेटरी चीज़ें जो जो सेलियंट फैक्टर्स हैं वो उसके अंदर ये होना चाहिए कि आपका जो न्यूट्रिशनल फैक्ट का टेबल वो ज़रूरी है, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट ज़रूरी है दोनों लैंग्वेजेस में, फ्रेंच में और इंग्लिश में। और आप आइडेंटिफाई करें, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर बेटर है कि अगर आप अपने अपने एक्सपोर्टर को आइडेंटिफाई करें और इंपोर्टर को भी आइडेंटिफाई करें उसमें, दैट इंपोर्टेड बाय फ्लावर डिस्ट्रीब्यूटर। बाकी बैच नंबर हो गया, फिर एक्सपायरी डेट हो गई, या बेस्ट बिफोर हो गया, या वार्निंग एलर्जन हो गया, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ पार्ट ऑफ लेबलिंग रिक्वायरमेंट। तो विदाउट बहुत से लोग बाइलिंगुअल लेके आते हैं, लेकिन वो इंटरिम होता है, टाइम पीरियड उसका डिफाइन नहीं होता, एंड व्हेनेवर इट गेट्स कॉट by the agencies, then they can impose a restriction and bring in that product further, और वो फ्लैग भी हो सकता है। एक दफा फ्लैग हो गया तो फिर फ्लैग हटाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो डू राइट थिंग फ्रॉम स्टार्ट। ओके, दूसरा सवाल ये था कि जो इंपोर्ट करेगा, जो इंपोर्टर है देसी फूड का, उसके पास क्या लाइसेंस होना चाहिए? CFI का कोई लाइसेंस होता है सेफ फूड का? जी उसके पास जो है CFI का लाइसेंस नहीं होता, ट्रेडिंग लाइसेंस होता है, वो होता है जो उसको कैनेडियन अथॉरिटीज से मिल जाता है। नाउ स्पेसिफिकली तो मैं आपको नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली ये कहाँ से मिलता है, बट उसको ट्रेडिंग का लाइसेंस उसको अक्वायर करना पड़ता है। वी कैन फर्दर एक्सप्लोर इट इनटू एग्जैक्टली इसके प्रोसीजर क्या होते हैं। आई विल नोट इट डाउन, एंड इफ समबडी वांट्स टू हैव दिस इंफॉर्मेशन वी कैन डेफिनेटली कम बैक विद इट। परफेक्ट हो गया। एक और सवाल हमारे पास आया है, वो ये आया कि जो आपने मार्जिन की बात की थी, एक डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन हो गया, एक ट्रेड मार्जिन हो गया, तो आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस काफी है, तो जरा अप्रोक्सीमेट बता दें कितने होते हैं ये लाइक परसेंटेज वाइज, या जस्ट बॉल पार्क नंबर्स। या बॉल पार्क नंबर ये है कि यहाँ पे जो ट्रेड है, अगर तो प्रोडक्ट फ्रोजन है तो दे आर लुकिंग फॉर अ 40% मार्जिन, नॉट मार्कअप। और अगर प्रोडक्ट आपकी एम्बियंट है तो ट्रेड इज लुकिंग फॉर एटलीस्ट 35% मार्जिन। एंड डिस्ट्रीब्यूटर अगर वो प्रोडक्ट फ्रोजन है तो ही इज लुकिंग फॉर 30% मार्जिन। और अगर वो प्रोडक्ट एम्बियंट है तो ही कैन गेट इन द रेंज ऑफ 20 to 25% ऑफ मार्जिन। ओके, सो बेसिकली तकरीबन अगर आपने जो कहा तो हम समझें तो तकरीबन वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड हो गया बेसिकली ये। जी हाँ। तो अगर आपकी एफओबी प्राइस, अगर आप ये प्रिफिक्स करते हैं कि एफओबी प्राइस मेरी जो है $2 है, तो जी, आप जहन बना लें कि आपकी जो कंज्यूमर प्राइस होगी वो इससे 100% ज्यादा होगी। $4 इज गोइंग टू बी योर कंज्यूमर प्राइस, और इस 100% में आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ट्रेड मार्जिन में, डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन में, एंड फ्रेट कॉस्ट में। और अगर कन्वर्जन ऑफ करेंसी की इंप्लीकेशन होती है तो दैट इज सेपरेट। गॉट इट। ओके, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप अपने हैंड्स रेज कर लें, तो हम कर लेते हैं यहाँ फजल पे अब्बास सीरियस। साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं बोलना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा डिटेल बताया, लेकिन यहाँ से मोस्टली देसी लोग हैं और वो आदि तो आपकी शायद कन्वर्सेशन नहीं समझ सके, बट आई एम श्योर उन्होंने आपकी चीज़ें काफ़ी ली हैं। इसको एक आप किसी फॉर्म में, स्मॉल प्रेजेंटेशन फॉर्म में भी अगर दे देंगे तो तसल्ली से अदर पीपल कैन इवन गो थ्रू इट और उसको समझेंगे। बिकॉज ऑब्वियसली ये जो आपकी प्रेजेंटेशन है, ये अभी जो सारे पार्टिसिपेंट्स थे उनको कोई आइडिया नहीं था व्हाट टाइप ऑफ अ प्रेजेंटेशन इज गोइंग टू बी। तो अगर आप ये प्रेजेंटेशन दे देंगे कोई स्लाइड की फॉर्म में या थोड़ा ब्रीफ फॉर्म में, तो इट विल बी डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल। दूसरा, आपने मार्केट के बारे में बड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दिया है। ये जो सारे एग्जिबिटर्स आ रहे हैं, ये तो एक एथनिक मार्केट को बेस करके आ रहे हैं। दे हैव नो आइडिया कि अमेरिकन या कैनेडियन मार्केट कितनी बड़ी है। बिकॉज कैनेडियन मार्केट के जो सेगमेंट में हम जाना चाह रहे हैं, वो तो आई गेस 2-4-5% मेन सिटीज की होंगी, और उसमें से भी एक सर्टेन सेगमेंट है जो एथनिक उसमें आती है, बट मेन सिटीज फोकस इनको किया जाए। यू नो, सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि मेरा असल में तो 40 इयर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिकन मार्केट बिहेवियर। हमारी मार्केट बहुत बड़ी, यहाँ कनाडा नॉर्थ अमेरिका की मार्केट बड़ी नहीं है व्हेन इट कम्स टू द प्रोडक्ट्स व्हिच वी आर सेलिंग एज पाकिस्तानीज। वो बेसिस आपको पता ही है कि वो हमारी देसी हैं या वो हैं, और उनके सारी एसोसिएट्स हैं वहीं से स्टार्ट होती हैं। राइटली सो यू सेड कि जनरल मार्केट को फोकस करो, लॉबलॉज और ये जो चीजें हैं, ये तो आपने डाउन द रोड जाके कहीं
2-4 साल के बाद आप चेक करेंगे कि ये चीजें चलेंगी। बाकी ये है कि आपका इसमें जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप हमें और या हमें गाइड करें इन लोगों को सारों को कि B2B मीटिंग्स वगैरह कैसे हो सकती हैं, पिन पॉइंट अपने बायर को कैसे किया जा सकता है, जो रेलेवेंट प्रोडक्ट्स के वो हैं उनको कैसे किया जा सकता है। एंड अल्तमश साहब, यू आर राइटली सो बी वेरी हेल्पफुल कि हम वहां खड़े होके वो पान ना बेच रहे हो, हम खड़े होके इंतजार कर रहे हो मीटिंग्स का, उन लोगों का जो रेलेवेंट हो, जो आते हैं और आके डायरेक्ट हमें मिले और जाके कहे हाँ जी ये प्रोडक्ट्स हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट कांटेक्ट हो जल्दी से जल्दी और रेलेवेंट लोग आए, वरना ये होता है बेचारे स्टॉल्स के आगे वो खड़े होते हैं और वो वेट कर रहे होते हैं कोई बायर आए और बायर। तो इसमें आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि आप लोग हम जो एग्जिबिटर्स को मैं तो टू बी ऑनेस्ट विद यू मैं तो ऐसा नहीं चीजें कर रहा बिकॉज आई एम ऑलरेडी एग्जिस्टेंट इन लास्ट 40 years। लेकिन मैं अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए करना चाहूंगा कि जो न्यू विजिटर्स हैं, जो नई प्रोडक्ट्स लेके जा रहे हैं, नई वो चीजें लेके जा रहे हैं, उनके लिए ये होना चाहिए कि कैसे उनको हेल्प की जाए और उनके रेलेवेंट कनेक्शंस के साथ इनकी मीटिंग्स हों और वो बात की जाए। बिल्कुल तो तौफीक साहब, बाकी बिल्कुल 100%। थैंक यू सो मच फॉर द बाकी जो कमेंट्स। आपने जो प्रेजेंटेशन दी है वो एक्सट्रीमली गुड, बट मेरे ख्याल में जो हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स हैं ये आपकी बड़ी टेक्निकल है और बड़ी हेल्पफुल चीज है। इसको हर स्लाइड में रखें एंड वी कैन लर्न फ्रॉम देयर। इवन माय आई गेस माय किड इज आल्सो ऑनलाइन एंड आई वांट हिम टू लर्न and listen to you what you have to share and all that, because this is what the marketing, selling and everything is. So I'm really grateful। और थैंक यू सो मच हमारा सर, वैसे सो वहाँ काइंड ऑफ राइस यू। ब्रांड है कनाडा में। वी आर इन द मेट्रोज, वी आर इन अदोनिस, वी आर इन ऑल मेन स्ट्रीम सुपरमार्केट, 777, 717, 555 ब्रांड ऑफ राइस एंड पिंक सॉल्ट और अक्रॉस लॉबलॉज वी आर देयर। खैर, लेकिन ये तो हमारी 40 साल की वो बातें हैं। बाकी हमने अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये रखना है कि इनको इनके टारगेट बायर्स तक पहुंच जाएं, बस दिस इंशाल्लाह इज सर, द मेन इंशाल्लाह। ऑब्जेक्टिव। नहीं सर, हम तो चाहते हैं आपसे भी एक वेबिनार करवाते हैं। आपका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, तो हम आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे। विल ट्राई टू फाइंड आउट अ टाइम, जरूर मे बी अगर जरूर, आई वुड लव आप टू हमसे हेल्प करवाएं ऑल तो द ऑफ माय होल फ्रेंड्स पर्पस, एंड पार्टिसिपेंट फॉर एक श्योर। पर्पज ये है कि देखें अभी तो आप सियाल में 4-5 महीने पड़े हैं। मेन पर्पज ये था कि लास्ट ईयर मैंने पहली जो सियाल की हमने की, उसमें हमें नजर आया कि हमें वी नीड टू इन्फॉर्म आवर एग्जिबिटर्स प्रीलिमिनरी, ताकि जो इतना वेरी गुड। पैसा कर करके पाकिस्तान गवर्नमेंट लगवा रही है और एग्जिबिटर लगा रहे हैं, उनका पूरा पूरा हो फायदा। और आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि फजल भाई हैज बीन देयर फ्रॉम लास्ट ईयर आल्सो। तो वी विल कंटिन्यू इंशाल्लाह, नेक्स्ट मंथ भी करेंगे। अगर आप टाइम देंगे तो आपको भी लेंगे इंशाल्लाह। और आपने जो तरह कहा कि यही मकसद है मेन, कि जब ये आए तो इनकी लाइन मीटिंग्स लाइंड अप हो। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी मीटिंग भी है, काफी सारे पार्टिसिपेंट्स भी हैं। हमेशा एग्जीबिशन में हमें प्रोएक्टिव अप्रोच लेनी चाहिए, हमारी रिएक्टिव अप्रोच होती है। हमारे एग्जिबिटर्स को वो समझते हैं कि बंदा खुद उनके पास आएगा, जिस तरह आपने बजा फरमाया, आपने खुद बंदों के पास जाना है और विजिट करना है, एग्जीबिशन का पूरा फायदा उठाना है। ये इंशाल्लाह से टाइम वी गेट क्लोजर टू द इवेंट, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वी विल आल्सो कीप ऑन इन्फॉर्मिंग यू। सो थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट तौफीक भाई, शुक्रिया। तौफिक साहब सईद बहुत भाई। बहुत शुक्रिया। तौफिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आई वुड लाइक टू ऐड इन शॉर्ट में बिल्कुल ठीक है। आई विल इंशाल्लाह ट्राई टू मेक माय पॉइंट इन इन उर्दू आल्सो एज मच एज पॉसिबल। और मैं प्रेजेंटेशन का जो स्लाइड्स हैं आई विल डेफिनेटली डिस्कस विद अल्तमश भाई, इफ यू कैन शेयर इट विद यू ऑल। और जहाँ तक ये है कि हम किस तरीके से एक फोरम बनाएं जिसके अंदर तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक लिस्ट बनाएं, अल्तमश भाई कैन डू इट। आई थिंक एक डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट होनी चाहिए एंड दे शुड बी सर्कुलेटेड विद दिस प्रपोजल के कौन कौन सी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। सो दे आर इंटरेस्टेड और उनको पता होना चाहिए कि ये कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। सो व्हेन दे कम टू द एग्जीबिशन दे कैन रियली गो एंड विजिट दोस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बूथ्स। बहरहाल इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू फजल भाई। नहीं फजल भाई, लिस्ट से आगे जाएंगे इस दफा इंशाल्लाह। इस दफा सबको इकट्ठा करके लेके इन पर्सन लेके आएंगे इनके पास इंशाल्लाह। लिस्टें तो बनती रहती है, हमारे पास पड़ी हुई है वेरी इंशाल्लाह। गुड, सईद भाई। वेरी गुड, सईद, वेरी वेरी प्रोएक्टिव अप्रोच, रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत सो काइंड ऑफ यू सर। जी ये फर्स्ट हैंड हुआ हुआ है, जोहेब टेक ओवर कर ले भाई, फर्स्ट हैंड है। एक मुझे नाम नजर नहीं आ रहा। मोहम्मद अहमद का। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद साहब जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। जी मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं कजन्स फूड एंड स्पाइसेस से हूँ। माशाल्लाह, आई वुड लाइक टू गिव यू अप्लॉज कि आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी माशाल्लाह। और मुझे रिकॉल करा है मेरे एमबीए के टाइम्स को। अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है और वो ये है
कि आपने जिस तरह एक सफ़र बताया है कि आइडेंटिफाइंग योर प्रोडक्ट कमोडिटी है या तो उसको ब्रांड में लेके चलना है और एक राइट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपने हाथ मिला के और अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना है मार्केट में। अभी जी ये सारी चीज़ें करने के बाद आप थोड़ा सा सजेस्ट कीजिए कि ऑफटेक प्रोडक्ट की जो ऑफटेक है उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए कि अगर प्रोडक्ट जो है ऑफटेक नहीं हो रही है या हमारे डिज़ायर के मुताबिक नहीं हो रही है तो हाउ कैन वी क्वेश्चन माई डिस्ट्रीब्यूटर कि वहाँ पे वो अपनी अलाइनमेंट ठीक करे या तो फिर जो है वो मेरे एंड से अगर कोई कमी है और क्या प्रोबेबल कमियां हो सकती हैं एक मैन्युफैक्चरर की तरफ से। दिस इज माय बहुत क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है मोहम्मद अहमद। आई एम सो हैप्पी कि आप इस लाइन से सोच रहे हैं। देखिए, एक काम है, एक चीज की अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखें। डिस्ट्रीब्यूटर का काम है आपके प्रोडक्ट को ट्रेड शेल्फ पे पहुंचा देना, ठीक है। उसका काम है उसका काम है अवेलेबिलिटी एंड विजिबिलिटी प्रोवाइड करना, यानी कि अवेलेबल करा दे और विजिबल करा दे। विजिबल इस तरह कराए कि प्रॉपर मर्चेंडाइजिंग हो, डिस्प्ले की प्लेस बहुत अच्छी हो, उसका प्लानोग्राम बना हुआ हो, यही कर सकते हैं ना। राइट प्राइस जी सर लगानी हो। बिल्कुल। फिर जो ऑफटेक होता है ना प्रोडक्ट का, वो डिपेंड करता है प्रोड्यूसर पे या उसकी मार्केटिंग टीम पे कि व्हाट एंडेवर्स या क्या वो स्टेप्स ले रहे हैं अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, और क्या उनको इंसेंटिव और उन्हें किस तरीके से इंसेंटिवाइज कर रहे हैं ताकि जो शॉपर है, जब वो दुकान में एंटर होता है वो शॉपर होता है, लेकिन जब वो प्रोडक्ट जी यूज जी। करने लगता है तो वो कंज्यूमर बन जाता है, ठीक है। ताकि जो शॉपर है आपका प्रोडक्ट को उठाए, लिफ्ट करे, यूज करे, अगर क्वालिटी से सेटिस्फाई हो तो रिपीट सेल आए। तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर से सवाल नहीं कर सकते आप डिस्ट्रीब्यूटर से ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन कितनी कवर कर ली, कितनी परसेंट मार्केट पे आपने प्रोडक्ट को रखवा दिया है और विजिबल ओके। करवा दिया है और राइट प्राइस लगवा दी है। ये क्वेश्चन आप डिस्ट्रीब्यूटर से करें, लेकिन ऑफटेक की जिम्मेदारी जो होती है प्रोड्यूसर की होती है, मार्केटिंग की होती है। और इसीलिए मैंने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, आपके प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, और आपकी प्रोडक्ट की उस हिसाब से पोजिशनिंग क्या है, जिसकी वजह से आपकी मार्केटिंग कैंपेन बनेगी, चाहे डिजिटल हो, एटीएल हो, बीटीएल हो, और उसकी बेसिस पे जो है कंज्यूमर जाके आपके प्रोडक्ट को लिफ्ट करेगा, उससे आपकी सेलें आएंगी, ठीक है ना। ओके ओके सर, गॉट माय पॉइंट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? अच्छा, एक और अजमल खान ने काफी टाइम से हाथ उठाया हुआ है। जी जी, अजमल साहब प्लीज। आप म्यूट पे हैं अजमल जी। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, आवाज। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर सियालकोट से अजमल खान, रिवल इंडस्ट्रीज के नाम से मेरी कंपनी है और मैं पिछले 12 साल से ये वर्किंग कर रहा हूँ सेफ्टी ग्लव्स एंड वियर्स। और उसमें सेफ्टी ग्लव्स में मेरा एक दो क्लाइंट कनाडा के अंदर भी है। मेरी मेन आपसे ये क्वेश्चन है, अगर ये आपका जो सेशन है इसके लिए सूटेबल मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि आपका ज्यादा मसाला जात और इस तरह की आइटम्स के लिए आप बात कर रहे हैं, एग्जीबिशन है, कि ये सेफ्टी ग्लव्स एंड वियर्स की आपके जो सिटीज आपने बताए हैं इसमें मेन मार्केट्स कौन सी हैं, उसके बाद B2B की साइट्स कौन सी है इधर, जैसे कि अली बाबा है, और उसके बाद जो है ना कि हम अपने क्लाइंट्स की फाइनेंशियल, आपने एक बात की है कि फाइनेंशियल पोजीशन हम कैसे चेक कर सकते हैं थ्रू एम्बेसी या जो आप लोग हैं उनके थ्रू। तो ये 3 क्वेश्चन है मेरे, ये आप देख लें क्योंकि आपका टाइम इम्पोर्टेंट है जी। थैंक यू। अल्तमश भाई, would you like to respond to this? Then जी I जी will. बिल्कुल। जी अजमल भाई, बिल्कुल ये आज का वेबिनार तो मेनली इज फॉर फूड मार्केट एथनिक प्रोडक्ट्स। आपकी जो भी क्वेरी हो तो हमें काइंडली भेज दें, मैंने आपको ईमेल एड्रेस लिखा है वहाँ पे, मेरा अपना ईमेल एड्रेस है, काइंडली उस पर ईमेल एड्रेस भेज दें और हम जो है उसके अंदर आपको जो आपकी क्वेरीज उसका आंसर कर देंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सर। और अजमल खान, मैं जरा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो मेजर, अगर आप कनाडा की बात कर रहे हैं तो यहाँ मेजर मार्केट है ओंटारियो की, जी बिल्कुल। ब्रिटिश कोलंबिया की और क्यूबेक की। ये मॉन्ट्रियल, ये मेजर मार्केट है। क्यूबेक में मॉन्ट्रियल है, ओंटारियो में टोरंटो है, और ब्रिटिश कोलंबिया में वैंकूवर है। ये 3 मार्केट है। ये सारे इंडस्ट्रियल जोन है, यहाँ पे आप मार्केट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। और जहाँ तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का आपको पता करने का है तो अल्तमश भाई आपसे वो ईमेल्स, वो एड्रेसेस शेयर कर लेंगे जिसमें वो आप कुछ पेमेंट करेंगे उनको, और वो आपके उस पर्टिकुलर कस्टमर की पूरी फाइनेंशियल स्टैंडिंग निकाल के आपको दे देंगे। तो दैट यू कैन गेट इट। वो सर्विसेज पेड यहाँ मिल जाती हैं और ओपन होती हैं। तो इंशाल्लाह जो भी एजेंसीज होंगी दैट
आप या तो मुझसे कनेक्शन कीजिएगा या अल्तमश भाई से कीजिएगा, तो वो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। और वो B2B जो आप कह रहे हैं ना, वो मेन साइट जो है वो यहाँ पे Amazon जो कनाडा है, इट्स द बिगेस्ट, और वो भी बाकी भी हम निकाल, बाकी अपने Amazon, जो बाकी हाँ, लोगों ने अपने वॉलमार्ट की अपनी है, वॉलमार्ट की अपनी है, अमेजोन है, जी, ठीक है, बिल्कुल। वेफेयर हो गया वो अलग है, बट Amazon इज द मेन वन। हाँ, और वो भी हम पुलिस सबको आपके प्रोडक्ट के मुताबिक आप जो हम भेजेंगे तो हमको ईमेल कर देंगे इंशाल्लाह ताला। सर आप फजल भाई की ईमेल भी शेयर कर दें। जी जी बिल्कुल, आपकी फजल का भाई email काइंडली डालें। आपका कांटेक्ट, बिल्कुल। होता ही है कि सर हर वेबिनार के बाद जिन लोगों ने अटेंड किया इंशाल्लाह हम इधर मैसेज में भी डाल देंगे। फजल भाई आपका ईमेल शेयर करते हैं मैसेज के ऊपर। 100% कर दीजिए ये बात आप। जी, जोएब ईमेल सर का शेयर कर दें। उसके जी बाद जिन्होंने जो साइन अप किया हुआ है उन सब बंदों को हम ईमेल के थ्रू प्रेजेंटेशन की कॉपी अलॉन्ग विद कॉन्टेक्ट डिटेल सब कुछ भेज देंगे इंशाल्लाह। तो दैट्स व्हाई रजिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ना मिले तो मैंने अपना ईमेल डाल दिया, मेरे ईमेल पे किसी बंदा भी कांटेक्ट कर लेगा तो वी विल फॉरवर्ड इट टू देम, altamash@parktrade.ca। अच्छा, फराज साहब का हाथ उठा हुआ है। जी जी अस्सलाम वालेकुम जी। अल्तमश भाई कैसे हैं आप? फराज फराज साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, फजल भाई थैंक यू। कैसे हैं आप? माशाल्लाह जी, कैसे हैं? जबरदस्त, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। लर्निंग हुई जी। और दो इस वक्त इंडस्ट्री के जो है वो लीजेंड्स बैठे हुए हैं, फजल भाई और अल्तमश भाई। तो बाकियों को मेरा नहीं सर, सलाम जी। मैं तो छोटा, और मैं मैं तो अपना शागिर्द हूं, शागिर्द हूं नहीं, असल में। मैं बाकियों को थैंक मैं यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अपना तारुफ कराता जाऊं। मैं शकरगंज फूड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इंटरनेशनल सेल्स को मैं थैंक यू देखता सर। हूं। माशाल्लाह। और हमारा जी फूड बिजनेस है, डेयरी भी है हमारी, और हम जूस एंड नेक्टर्स जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने अमेरिका और कनाडा को भी स्टार्ट कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ फजल भाई, और डेफिनेटली के बैक पे जो हाँ है जी, वो अल्तमश भाई की भी सपोर्ट मिलती रहती है हमें। और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये छोटा सा था। हाजिर है सर आपके लिए और इंशाल्लाह हम। हमें जी जी थैंक यू। बहुत शुक्रिया जनाब। हमें एक जो एक एक्स्ट्रा से कहने की क्रेडिट मिलता है कि हमने चाइना में इस दफ़ा जो है वो एक्सपोर्ट किया है। नॉर्मली चाइना से इंपोर्ट ही हम अब तक देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जी हमने पिछले 6 महीनों में 50 कंटेनर्स जूसेस के चाइना एक्सपोर्ट किए हैं। तो वी आर द माशाल्लाह, कहा फर्स्ट जाए तो। जूस कंपनी जिनको ये एतराज हासिल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ड्यू टू अवर टीम हम स्पिरिट तो उस एंड दिन का इंतजार करें जब कनाडा क्वालिटी ऑफ टोरंटो में मिलेगा प्रोडक्ट्स। आपका जूस सर, हम तो उसमें लगे हुए हैं इंशाल्लाह। जब टोरंटो में जी मिलेगा सर, आपका जूस बिल्कुल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह जी जी, जल्दी मिलेगा बिल्कुल। आपको। फजल भाई हैं, अब ये करेंगे जी, इनके जिम्मे डाला हुआ हमने। पर मुझे भी बताते रहा करें तो हम भी पीछे पड़े हैं फजल भाई के। आप हमें बताते नहीं, भूल गए आप हमें। चले, दैट्स ग्रेट, नहीं नहीं, दैट्स माशाल्लाह। ग्रेट। अच्छा, एक मैं छोटी आपको सी एक बात बताऊं, मैं शकरगंज ग्रुप से सर, बहुत इम्प्रेस हूँ। When I was a student, when I was an MBA student, and I saw the advertising campaign that Shakarganj launched against Angro, बहुत जबरदस्त कैंपेन थी। मुझे याद है आपके गुड मिल्क की एडवर्टाइजिंग कैंपेन, इट वाज अमेजिंग। अभी तक मेरे कानों में वो जिंगल चलता है। तो जी कुडोज सर, दैट इज रोज रोज गुड मिल्क पिया करो, वो रोज रोज बिल्कुल गुड था मिल्क जी, पिया बड़ा करो, मशहूर jingle। हेल्दी लाइफ जी हाँ जिया जी, करो। तो ये चीज जी देखिए, बड़ी हेल्दी लाइफ जिया जबरदस्त करो। बात जी है। जी, एंड इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू फराज साहब, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्दी। इंशाल्लाह। ठीक ठीक, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चंस? चलिए जी जोएब, आई क्लोज। थिंक ये था। चलें, चलें थैंक जी, यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और स्पेशली फजल भाई, थैंक यू सो मच। नो वरीज। सबके लिए इतनी लर्निंग हुई, इतनी इंटरेक्शन हुई, और इंशाल्लाह यहाँ से हम जरूर देखेंगे कि 3-4 लोग हमें नॉर्थ अमेरिकन के स्टोर्स में दिखाई दिए। और इंशाल्लाह। फजल भाई का ईमेल भी मैंने शेयर कर दिया है। तो प्लीज एनीवन हु हैज एनी फर्दर क्वेश्चंस, गाइडेंस, एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड क्वेरीज, आप अल्तमश भाई, मुझे और फजल भाई तीनों को ईमेल कर सकते हैं, एंड इंशाल्लाह विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड। हर महीने हम एक वेबिनार करते हैं। वी ट्राई टू चूज द अपकमिंग टॉपिक रिलेटेड टू एनी एग्जीबिशन कमिंग अप। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह आपको ईमेल्स भी भेजते रहेंगे, कम्युनिकेशन। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की है वो प्लीज अपना ईमेल उस फॉर्म में डाल दें, ताकि मैं आपसे इन टच रह सकूं और इस तरह सेशन हम करते जाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू फजल भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह थैंक यू सो हाफिज, मच। अल्लाह हाफिज अल्तमश साहब, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज थैंक ऑल द यू। पार्टिसिपेंट्स, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।